Hi guys, welcome to my voiceover episode. In this video, I'm going to share a very simple beauty remedy that will solve almost your every skin problem. So, without wasting any time, let me show you how to make the rice cubes. For this, I'm going to take 1 cup of rice and gonna rinse it with cold water. If you are enjoying this video, do give a like or leave a comment. And if you are new to this channel, hi, this is your girl Jenisha. Make sure to subscribe the channel so that you can enjoy all the fun DIY beauty and fashion acts. So now rice अच्छे से wash कर लिया है and I'm going to add a full glass of water and gonna leave it for 2 days. Now everyone knows that using rice water you can achieve glass looking like skin. So कुछ टाइम से मेरे cheeks पे acne scars हैं, वो जा नहीं रहे थे and my skin was getting worse and worse and dark circles and puffy eyes. My skin lost the shine that I used to have and I used to have skin very clear. Now back to the bowl. After keeping it for 2 days, राइस बहुत सॉफ्ट हो जाएगा एंड यू हैव टू क्रश राइस. आप अपना हैंड से भी उसको क्रश कर सकते हैं. इट इज़ सो सॉफ्ट. और यू कैन यूज़ मिक्सी बट द थिंग इज़ आई एम यूजिंग हैंड. मुझे इसके थोड़े बड़े चंक्स ही चाहिए राइस के बिकॉज जब मैं फेस स्क्रब करूँगी ऑलरेडी ये बहुत सॉफ्ट रहेंगे. फेस बहुत अच्छे से स्क्रब होगा. And now you can see how the color is changed. ये rice water actually rice water ही लग रहा है, पूरा milky हो गया है. Now I am going to take a ice tray and I am gonna pour water by spoon. I don't know मैंने spoon से क्यों pour करा, but okay, you got the idea कि how milky it should get. And now what I am going to do is I am gonna take स्मॉल अमाउंट. ये मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया फ्लो में एंड आई एम गोना स्कूप इट आउट एंड आई मेड अ मेस बट हियर इट इज़. आई एम गोना टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस एंड गोना पोर इट. ये जो है बॉटम में सिंक हो जाएगा. लेट इट सिंक. इसका पूरा मिक्स होना ज़रूरी नहीं है बिकॉज द रीज़न इज़ यू विल गेट टू नो. नाउ आई एम गोना टेक गुलाब जल एंड इसको मैं ऐसे ही रैंडमली स्प्रे कर दूँगी. 4 to 5 टाइम आई एम स्प्रेइंग इट. आपको अगर गुलाब जल नहीं चाहिए है यू कैन स्किप दिस पार्ट और you can also add lemon drops. So now my rice cubes are ready and this is how it will look. नीचे जितना भी राइस है वो जाके सेटल हो गया है and पूरा राइस वाटर ऊपर आ गया है. Now I will show you how to use it and the benefits of rice and ice. In 2013 study showed rice water fermented can help to improve skin damage. Fermented rice water have natural sunscreen properties. It is also good for anti-aging and it will soothe the skin. Rice water will help to clear up your all blemishes and scars and will also help to reduce the wrinkles. You can also use as body scrub to exfoliate and remove all the dead skin. Rice water will reduce oiliness also. Now let me tell you the benefit of ice. Ice will help to relax your face muscle, remove all the puffiness around the eyes and jaws. I like to rub around my jaws. It calm my muscle, it relieve all the tension. Now using ice will decrease the chance of blemishes and acne. It will also reduce the sign of aging as we all are growing. As you can see मेरे आइस का अब वो पार्ट आ गया है जहाँ सिर्फ राइस है. So now I like to scrub my face with a very light hand. Do not rub it hard and
इसको अपने forehead से मसाज करते हुए you can go to your cheeks, you can also exfoliate your lips, your neck, your hands. ये मेरे मॉर्निंग का रूटीन हो गया है. फ्रॉम लास्ट 15 days आई एम यूजिंग दिस एंड बिलीव मी आई कैन सी रिजल्ट्स. माई एक्ने स्कार्स आर गेटिंग लाइटर एंड लाइटर डे बाई डे. मेरे अंडर आइज भी जो है ब्राइटन अप हो रहा है. माई स्किन इज़ गेटिंग मोर क्लियर एंड आई एम अगेन बैक टू द शाइन. माई स्किन इज़ शाइनिंग. इफ़ यू गाइज डोंट नो, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है जिसमें आई शोड हाउ टू इम्प्रूव योर स्किन नेचुरली, but I was not happy with my skin because I was left with all the scars, and I thought I should do something like जिससे मेरे acne scars बहुत light हो जाएं. And I came up with this idea to mix water and rice water and ice cube, and then मेरा डेली का ये रूटीन हो गया फ्रॉम लास्ट 15 days. एज मैंने इससे पहले ये बोला. वन थिंग गाइज, इट्स अप टू यू. आपको अगर डेली स्क्रब नहीं करना है, स्किप दिस पार्ट. आप सिर्फ राइस वाटर भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रे बॉटल में. उसको आप डेली स्प्रे भी कर सकते हैं एंड रिंस कर सकते हैं कोल्ड वाटर से, और या फिर उसका आप क्यूब कर लीजिए, बना लीजिए, उसको एज अ आइस फॉर्म यूज़ कर लीजिए. इट्स टोटली अप टू यू. एंड इफ़ यू लाइक टू स्क्रब योर फेस डेली लाइक मी, डू नॉट अप्लाई प्रेशर ऑन योर फेस. बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है. एंड आई लाइक टू अप्लाई मोस्ट प्रेशर ऑन द एरियाज़ जहाँ मेरे एक्नेज़ हो रहे हैं या अंडर आइज़ पे. आई लाइक टू मसाज बट विथ अ वेरी जेंटल हैंड. नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस विथ कोल्ड वाटर एंड हियर आई एम बैक. I feel so refreshed, so fresh. My skin feels so soft. Now guys, remember, moisturize your face immediately. हमेशा ये करने के बाद मॉइस्चराइज़ करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी या आपको और आपके पोर्स ओपन हो गए हैं. यू हैव टू लॉक द मॉइस्चर बैक. हियर आई एम. मैंने भी सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है. आई हैव नॉट अप्लाइड एनी मेकअप. यू कैन सी मेरे जो स्पॉट्स हैं बहुत लाइट हो गए हैं एंड आई फील सो हैप्पी. माई फेस फील लाइक अ बेबी butt. I am so happy to share this beauty hack with you guys. Do try this, and if you try this, do tag me on Instagram. Until then, bye bye. See you in my next video.